हेलो एवरीवन। सो मैंने एक लेक्चर अपलोड नहीं की थी, ये रह गया था लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो वो मैं करा के भी अपलोड कर दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस 2026 के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। चलो, हमारा वही इसको अप्रोच रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अप्रोच हमेशा कांस्टेंट रखो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद कॉमा के बाद पूरा पढ़ने के बाद फिर से पढ़ना है, फिर जहाँ आप कॉमा पे पहुँचो वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को लिखो, फिर फुल स्टॉप तक पहुँचो, जो भी डेटा दे रहा है उसके बाद लिखा करो, लेकिन पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। तो वही करेंगे। फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, maximum number of sphere of diameter 1.4 centimeter are scooped out. Find the total number of hemisphere that can be scooped out. Also find the total surface area of the remaining solid. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस, एक फेस से क्या कर रहे हैं, सॉलिड वुड का क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग निकाल रहे हैं जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो कुल मिला के बात ये कह रहा है कि वी हैव अ क्यूब, ठीक है, वी हैव अ क्यूब हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर, ओके, हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर and it is also 14 centimeter. What the question is saying that one of the faces out of 6 faces I am choosing this face as one of the faces in order to scoop out the hemispherical shapes, ओके। इसमें से हेमिस्फेरिकल शेप हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला आइसक्रीम वाली बात वही हमारे पास वहीं पाएगी घूम फिर के। आइसक्रीम का क्यूब लो, उससे निकाल के देखो, पता चलेगा वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो हमने हेमिस्फेयर निकालना स्टार्ट किया, ठीक है, हेमिस्फेयर निकाला हमने ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पूरा, हाँ, ये हमने हेमिस्फेयर कट आउट कर लिया सर, ठीक है। ये पूछ रहा है इस फेस से मैक्सिमम कितने हेमिस्फेयर निकाले जा सकते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायमीटर 1.4 है, क्या है ये हमारा, अच्छा इसको रेट से बना देता हूँ ना, ठीक है, तो समझ में आएगा। ये जो हमारी साइड है, ये साइड जो है ये हमारी 14 है, ठीक है। इसमें हमारे ऐसे ऐसे हेमिस्फेयर आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, ये टच करेंगे। ये टोटल 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये 1.4 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। ऑब्वियस सी बात है टोटल इसके डायमीटर सबके सम के और इस ये सम इक्वल होगा। दिस मीन्स 14/1.4 विल गिव यू द टोटल डिजायर्ड नंबर ऑफ हेमिस्फेयर यू कैन कट आउट इन अ सिंगल रो, ठीक है। सिंगल रो में कितने निकलेंगे, 10 निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो हमारा है इस साइड में हम ऐसे 10 निकाल सकते हैं और सिमिलरली इस साइड में हम ऐसे 10 निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंचेंगे 100 पर। टोटल 100 हम एक फेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर वी कैन कट आउट इज 10 फ्रॉम दिस फेस, 10 फ्रॉम दिस फेस, सॉरी 10 फ्रॉम दिस एज एंड 10 फ्रॉम दिस एज। टोटल विल बी 100 हेमिस्फेरिकल शेप विच वी कैन स्कूप्ड आउट, ओके। 100 स्फेरिकल आउट, टोटल नंबर तो हमने निकाल लिया 10 × 10। Now, what the second part of the question is saying that we have to find the total surface area of the remaining solid. What is the total surface area of the remaining solid? So, we have 5 faces plus 1 faces from where which we have already scooped out the hemispherical shapes. Okay. Now, 5 faces have 10 × 10, no doubt. Okay. Now, the remaining 1 face from where we have scooped out the hemispherical shape. So now I have already told you that when we are scooping out a hemispherical shape, what is going to happen, we are replacing the circular face with hemispherical shape, ठीक है। circular shape is replaced by hemispherical shape. So the pi r square, if the radius is r, is replaced by 2 pi r square, okay. So the total surface area initially before scooping out was 10 × 10. Now when we scoop out, then what will happen, our pi r square
will eliminate, it goes eliminate, and 2 pi r square will add up. Okay, no doubt. So this is going to your remaining total surface area of the solid cube. Okay, this question has come out many a times. Okay, many times we have seen the same phenomena is occurring here. Okay, and where we have encountered the same thing, the same happens here. This is the same thing, you are scooping out. Okay, so the cylinder which have circular face now have depression area after scooping out. This is the same question, same fundamentals have been used. Okay, now any other question, this is the same. You can see after an analysis, deep analysis, after analyzing the question, what you can infer, you can certainly infer that CBSE is going to ask a typical type of pattern. It is stick to this, and obviously I guaranteed that they will ask next year also. Okay, so that was all. Now come to the main point. Now, so this is our going to surface area. You can put r is equal to diameter was 1.4, so the r will be 0.7 centimeter. Be careful while putting the r, do not put 1.4. okay, now what is our next question? So I'm writing this. Okay, you can note down if you want. What the question is saying is that let us follow the same thing approach. We are going to read the question completely without any hesitation. From a solid cylinder of height 24 centimeter and radius 5 centimeter, two cones of height 12 centimeter and radius 5 centimeter are hollowed out. Find the volume and surface area of the remaining solid. Okay, now what the question is saying, from a solid cylinder, we have solid cylinder. That is our solid cylinder of height 24 centimeter. Okay, good. And radius 5 centimeter. Okay, done. Two cones of height 12 centimeter. There are two cones, height 12 centimeter and radius 5 centimeter are hollowed out from this cone is hollowed out from this cylinder. Okay, so what we can say, okay, this will be 12 centimeter and the remaining will be 12 centimeter. Okay, and the radius is still 5 centimeter. So what we can say that we are scoping two cylinder. This is the same concept. You can see this question here, we are scoping hemispherical shape. Here what we are scoping here, okay, we are scoping here cone. Okay, find the volume and surface area of remaining solid. We have to find the volume and the remaining solid. Volume is simple. What we can do for volume, for the total volume of cylinder minus 2 times of volume of cone. Okay, 2 times of volume of cone, if we subtract, we get the volume of remaining solid, final volume. Okay, final volume. So what is the volume of cylinder? You can put down pi 5 square into 24. Okay, and minus 2 times of 1/3 pi 5 square into 12. No doubt, this is going to the remaining volume 1/3 pi square. There are two cones. Okay, now they are asking about the find the volume and surface area of remaining solid. The surface area in the sense the total surface area of the remaining solid. Now the same thing is going to happen here. Okay, first of all, imagine this figure in your mind. Initially you have cylinder, then you scoop out the cone. If you scoop out the cone, the upper circular part will be replaced by conical depression and the lower circular part will be replaced by conical depression, and it will look like something this. Okay, now okay, now we have to find total surface area. Okay,
just get through it. First of all, the curved part of the cylinder is not going to be affected in any way. Okay, so the curved surface area will be included in the total surface area, which is equal to pi 2, okay, sorry, curved surface area will be included 2 pi RH of the cylinder plus, now the top circle layer is replaced and the what we say that conical surface area, that cone curved surface area is included. So the net surface area will be 2 times of, because there are 2 conical depression. Okay, 2 pi RL. Okay, L you can find easily under root 12 square plus 5 square, it will give you 13. Okay, you can remember it. If you will solve lots of questions, you will get through it, that it is not a very tedious work. Okay, 12 square plus 5 square 13, you will get the L, you will know the radius is equal to 5 centimeter. You can put down and you can solve the question. Okay, now let's move forward. What the question is saying: if a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out. Okay, this is a very simple question. This is completely application based, what you have observed while formulating the formula. When you are writing the formula of cone and cylinder, then what you infer from that formula, this is completely analysis based. Okay, so what this question is saying: if a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, you are given a cylinder, you have a cylinder, it is in solid form, its height is h, its radius is r. Okay, you are scoping out a cone of greatest possible volume. Okay, so obviously its height will be like this. Okay, its height will be like this. After scoping out, you will get this cone whose height is h and radius obviously will be r, because the base will be circular as of the cylinder. Okay, now then the ratio of the volume of remaining wood, the remaining wood to the volume of cone hollowed out. Let the remaining volume be y and the cone volume be x. Okay, now you have noticed, if you have read it in your, obviously you have already read it, volume of cylinder is given by pi square h, and volume of cylinder and volume of cone is given as 1/3 times of pi square h. What you can see, there is pi square h, there is pi square h. If the radius and height of the cone and cylinder is same, then we can say that volume of cylinder is 3 times that of the cone. Or in other words, we can say that in order to fill a cylinder of height h and radius r by a cone of radius r and height h, we have 3 layers. This for the first cone, this for the second cone, this for the third cone. Okay, that's what it is saying. Okay, now if we hollowed out one cone, then obviously 2 parts will be remaining and 1 part will be here. Okay, and total will make 3. So the ratio will be, the ratio of volume of remaining wood will be 2:1. Okay, mathematically you can solve it, but it not needs to solve because you already know the formula. Okay, so 2:1 will be the right answer. Okay, remaining wood to the volume of cone hollowed out. Remember, here it is written remaining wood, not the initial wood. Okay, so now let's move to the next question. What is it is saying? From one face of a solid cube of side 14 cm, the largest possible cone is carved out. Find the volume and surface area of the remaining solid. Use pi is equal to 22/7, under root 5 is equal to 2.2. Okay, now what it is telling, it is obviously, I can think that this is a 5 marks question or 4 marks. Okay, because it's in 34 number. Let's move to blue color is good. From one face of a solid cube, so we have a cube which is solid in nature, not hollowed. Okay, side 14 centimeter, side 14 centimeter, side 14 centimeter. Okay, the largest possible cone is carved out.
Largest possible cone. I think I have already told you this question. It was in MCQ. Okay, the base will looks like this. Okay, so base will be like this and this will be the height. Okay, find the volume of surface area of the remaining solid. We have to find the volume and the surface area. Okay, so we can easily find out the volume of the remaining solid. What will be the volume? Volume of cube minus volume of cone. What we can find out about the cone? That the height of the cone is 14 centimeter. Height of the cone is 14 centimeter, obviously, from here to here. Okay, and the diameter is 14 centimeter. You can see this will be the diameter, and this is the point where the circular part of the circular base of the cone is touching the edges of the cube. So it will be 14 centimeter, so diameter will be 7 centimeter. Sorry, radius will be 7 centimeter, diameter will be 14 centimeter. So you can easily solve a cube minus 1 by 3 minus 1 by 3 pi 7 square into 14. Okay, this will be the volume of the remaining solid. Now let's come to the second part of the question, which said what is it? It has been asked to find the surface area of the remaining solid. Okay, remaining solid surface area. So it is the same concept what we have already done in the cylindrical part. Okay, the same we have to do here. Now this is our cube and we have we have scooped out a cone from here. Okay, now surface area. We have 6 faces, and from one face the circular part has been removed because it forms the base of the cone. Okay, so it has been removed, it has been moved out. Okay, so for the 5 faces, what would be the surface area? 5 into 14 square. Done. Plus for these faces, for this face, what would be the surface area? This would be this corner, this corner, this corner, and this corner. Okay, so how can we find out? Obviously 14 square minus pi 7 square. Okay, so this is about the faces. Now let's come to the inner surface, curved surface area of the cone, which had been already scooped out. Okay, it will also add up into the total surface area, which is equal to pi r l. So l you can easily find out. You know the r 7, you know the height, that is equal to 14. So l will be find out 14 square plus 7 square, 196 plus 49, 96. It will be equal to, you can add up. Okay, so you will find out this and you can put out pi is equal to 22 by 7 and root 5 is equal to 2.2. It will result into something root 5, so it is given here to put it as root 5. Okay, so let's come to the next question, what it is saying. A conical cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of radius 10 centimeter. Curved surface area of the cavity carved out is, okay, use pi is equal to 3.4. A conical cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of radius 10 centimeter. You can see that CBSE mindset. They are stick to the same topic, carving out, scooped out. And I bet in the next year they are going to ask the same question. Nothing changed. Okay, this is the CBSE mindset. After you will analyze so much amount of previous year question, you have to start with previous year question. Previous year question is not the end point of your preparation, it should be the starting point of your preparation. Okay, so what it has been asked, curved surface area of the cavity carved out. It is also simple. Curved surface area will be for the hemisphere, it will be 2 pi r square.
and for the cone, which is the inner curved surface area, it is given by pi r l. Okay, L can easily be find out, you know the R, you know the H, L can be find out. It is so simple. Okay, now I think this is of the 2026 question. Now, a camping tent is in hemispherical shape of radius 1.4 meter, has a door opening of area 0.5 meter square, outer surface area of the tent is. Okay, a camping tent is hemispherical in shape. Okay, radius 1.4 meter, got it. Has a door opening of area 0.5 meter. It is obvious if you are going for any camp, this hemispherical shape tent is given to you, but it has also a door opening so that you can get in and get out. Okay, outer surface area of the tent has been asked, so you can find out easily and obviously the base is not counted in this. Okay, so outer surface area can easily be find out by deducting 2 pi r square minus 0.5 meter square. Okay, sorry, 0.5 meter square, and radius it is given already to you. Okay, now let's come to this. A wall mounted lamp made of fabric is shown below. Okay, lamp has cuboidal shape, open from top and bottom. Okay, it is open from top and bottom. I guess it is something like this. And from top and from bottom it is open. Okay, top and bottom. A spherical bulb of diameter 7 centimeter is lashed with a very thin rod. Ignore the rod while making calculation. Okay, dimension of the cuboid are 24 centimeter, 12 centimeter, 17 centimeter. Find the surface area of the bulb. What could be the maximum diameter of the bulb if at least 1 centimeter space is left from each side? Find the area of the fabric used if there is a fold of 2 centimeter on top and bottom edges. Find the space available inside the lamp. Okay, let's get to the work. सो वी हैव ये सबके घर में होता है लैंप, मतलब सबके घर में नहीं होता है, होटल में होता है. ठीक है, बहुतों के घर में नहीं होता है, ये मेरे घर में तो नहीं है, होटल में होता है. ऐसा दीवार पे लगा रहता है, उसके चारों तरफ से ऐसे अच्छा सा लगता है देखने में. ठीक है, पिक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है. देखो यहाँ पर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है बोर्ड से, ये अंदर से एक बल्ब गया है जो हेमिस्फेरिकल इन शेप है इसके अंदर. ठीक है, टॉप और बॉटम से खुला हुआ है. ठीक है, नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब. सरफेस एरिया बल्ब का बोला है निकालने के लिए. ओके, ईजी है सरफेस एरिया निकालना. आपको डायमीटर दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द रेडियस 7/2. you find the radius, you will get the surface area that is equal to the 4 pi r square, because it is spherical in shape. It is already written here, spherical. ठीक है, this is written here, spherical. So it will be surface area 4 pi r square. Now what could be the maximum diameter of the bulb if at least 1 centimeter space is left from each side? Now you have to visualize this thing in 3D में विजुअलाइज करना दिमाग में. ठीक है, कि एक बॉक्स है. ठीक है, कार्टून होता है ना, कार्टून जिसका ऊपर और नीचे खुला हुआ है, सिर्फ चारों साइड है. या अब समझना है तो अपना कमरे में बैठे हो तो उस कमरे को समझ लो जिसकी ऊपर की छत गायब है, नीचे की ज़मीन गायब है, चारों तरफ से सिर्फ दीवार है. ठीक है, और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग तो मिनिमम होनी ही चाहिए हर दीवार से, मिनिमम 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो ये अगर उस कमरे को देखोगे ना टॉप से तो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, जिसकी 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर हमारी क्या है. अच्छा, इसको कीवर्ड को मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया नहीं था. ठीक है, ये क्यूबॉइड है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, LBH 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर. ठीक है, ना ये हो गया अपने पास. यहाँ पे दे रखा है डायमेंशन. ठीक है, तो ये कह रहा है अगर ऊपर से देखेंगे हम तो हमको ये 24 सेंटीमीटर वाला दिखेगा और ये 12 सेंटीमीटर वाला दिखेगा. ठीक है, कह रहा है कि इसके अंदर हमने हेमिस्फेरिकल बल्ब लगाया है. ठीक है, और ये स्पेसिंग मिनिमम 1 सेंटीमीटर की तो होनी चाहिए. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक
ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए कम से कम। इधर भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ओके है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो ओके है, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, फ्रॉम इच साइड लेफ्ट स्पेस इज लेफ्ट फ्रॉम इस साइड, इस साइड से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये, और ऊपर नीचे से भी होना चाहिए, फ्रॉम इच साइड बोल रहा है तो ठीक है, ऊपर नीचे से भी 1 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमें क्या समझ में आ रहा है कि 12 सेंटीमीटर विल द डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर द radius of the bulb or you can say diameter of the bulb. Total it is given 12, it will be equal to 10 सेंटीमीटर, मिनिमम 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर स्पेसिंग जो होगी वो 1 सेंटीमीटर की नहीं रहेगी, 1 से कम हो जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो रेडियस हो सकता है बल्ब का वो डिसाइड कौन करेगा, 12 सेंटीमीटर वाला साइड करेगा, डेट इज इक्वल टू 12 - 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है यहाँ पर से ना, कह रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। चलो इसको हटाओ, देखो क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज अ फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एज। बॉटम एज और टॉप एज पर 2 सेंटीमीटर का फोल्ड है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज अ फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप। तो ये ना कुछ ऐसा सा दिख रहा है, अगर एक दीवार को लेंगे तो ऐसा फोल्ड है, ठीक है, मतलब हर दीवार पे थोड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर का फोल्ड है। उसी हिसाब से कह रहा है कि टॉप एंड बॉटम एजेस में हमारा सिर्फ टॉप एंड बॉटम एजेस में बोल रहा है, मतलब ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये हमारे पास ये बक्सा है, ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का फोल्ड है, ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का फोल्ड है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसा फोल्ड है, यहाँ पर ऐसा मुड़ा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज, कितना फैब्रिक यूज हुआ है इफ़ देयर इज अ फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एज। टॉप और बॉटम एज पे सिर्फ हमने 2 सेंटीमीटर का फोल्ड किया है, ठीक है, तो निकाल लो कितना फैब्रिक यूज हुआ है तुम्हारा, ठीक है। नाउ फाइंड द स्पेस अवेलेबल इनसाइड द लैम्प, कितना स्पेस अवेलेबल है वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, नथिंग। On a Sunday, your parents took you to a fair. You could see a lot of toys displayed, and you wanted them to buy a Rubik's cube and a strawberry ice cream for you. ठीक है, चलो भाई। Based on the information given above, answer the following question. Find the length of the diagonal of Rubik's cube if each edge measures 6 सेंटीमीटर। चलो ये सही क्वेश्चन है, इजी भी है। सही क्वेश्चन क्या है, अब कमरा अपना इमेजिन कर लो, सबसे बेटर। रूबिक्स क्यूब पे क्यों जाना है, उतना छोटा चीज़ में क्यों देखना है, कमरा इमेजिन कर लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। कमरे की ये छः हो गई फेसेस टोटल, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो भी है, ठीक है, हो गया। हमें कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डायगोनल है ना, इसकी लेंथ निकालने बोला है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ये भी, देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर हमें ये पता है हमें, ये भी पता है हमें, सॉरी ये पता है हमें, ये पता कर लेंगे, ये पता चल जाएगा। लेकिन ये कैसे पता करेंगे, ये वाला लाइन, ये ग्रीन लाइन कैसे पता करेंगे, ये हमें पता है, ये पता है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो आराम से सब पता चल गया। सब में पाइथागोरस लगेगा और कुछ नहीं। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये आ जाएगा √a, 2√a, सॉरी a√2, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, a√2, ठीक है, ये आ जाएगा a√2। a√2 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये भी हमारे पास a है, तो ये आ जाएगा, कर लो, √a² + a² × 2, तो √3a, तो ये आ जाएगा √3a, ये याद ही कर लो, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तो √3 × 6, ठीक है, डायगोनल आ गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूबिक्स के क्यूब इफ द लेंथ ऑफ एज इज 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 × 7, ओके। Now, what the curved surface area of hemisphere if the base radius is 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर का बोल रहा है कि अगर इसका बेस रेडियस, ये रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, 2πr², where r is 7. If two cubes of each 4 सेंटीमीटर join and twin, then find the surface area of the resulting cube. ऑब्वियस सी बात है, दो क्यूब को अगर एंड टू एंड जोड़ देंगे
ठीक है, 2 क्यूब को एंड टू एंड हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये था हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4, ये 4, तो ये रिजल्टिंग बन गया हमारा 8, ये रह गया हमारा 4 और ये रह गया 4। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नाउ इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेनी वेराइटीज ऑफ मशरूम अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वन सच मशरूम अमानिता मुस्कारिया मुस्की मार रहा है, हैज अपर पार्ट विच इज लाइक रेड कैप हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज लाइक वाइट स्टेम सिलेंड्रिकल, द हेमिस्फेरिकल कैप is of radius 3 centimeter, cylindrical stem is 2 centimeter high, 2 centimeter high, and this is 3 centimeter in radius, okay, got it, with diameter 1.4 centimeter, this is 1.4 centimeter, got it. Considering mushroom a solid object, answer the following question. What is the total height of mushroom? Total height will be given as 12 plus 3, this is also 3, this is radius 15 centimeter, okay. Now find the volume of the stem. Stem is in cylindrical shape whose height is 12 centimeter and radius is 1.4 by 2, okay. If radius is 1.4 by 2, you can easily calculate pi r square h will give you the volume. Determine the volume of 7 such mushroom. 7 such mushroom in the sense ki 7 into pi r square h for the cylinder plus pi r1 square h plus pi 3 2 by 3 pi r cube, r2 cube, r2 will be the radius of hemispherical part of the mushroom, that is 3 centimeter from here, okay. Now find the total surface area of 7 such mushroom. You can find for 1 and you can find for 7. Same, 2 pi r2 square for the curved surface area of the hemisphere. Now pi r, what I have done, two pi r1 h for the curved surface area of the cylindrical part, okay. Now the base of the cylindrical part also will be included. What is the base? Pi r1 square. Now let us look at the jointed part, this part. If you look this part, you will observe this is the circular base of the hemispherical part and this is the cylindrical upper circular base, okay. So this is r2 and this is r1, sorry, this is r2 and this is r1. So you can easily calculate the remaining area, which is given by pi r2 square minus pi r1 square. So system is going to be slow. Pi r2 square minus pi r1 square, okay, into 7 you can easily do that. So r2 is the 2 pi r2 square, this is the curved surface area of the mushroom, plus 2 pi r1h which gives the curved surface area of the that one part, cylindrical part, and pi r1 square for the base part of the cylinder, and the pi r2 square minus pi r1 square will be given as this one, okay. So the total surface area of the 7 such mushroom can be easily find out, okay. So we will end here our session for the surface area and volume PYQs, and I will jump to the trigonometry session in the next class, okay. Thank you very much, bye bye.